Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about the nursing care plan that is ineffective tissue perfusion, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन का नर्सिंग किट प्लान देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान ऑन इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। नर्सिंग केयर प्लान को हम यहाँ डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप से कंप्लीट करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन। तो ये सारा हम नर्सिंग केयर प्लान फॉर्म में तैयार करेंगे। नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। तो देखते हैं यहाँ पर, इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन occur when the exchange of gases, nutrients and waste within the blood vessel is impaired. Ineffective tissue perfusion describes the lack of oxygenated blood flow to areas of the body. Related factor for ineffective tissue perfusion are insufficient blood flow, interruption in blood flow to organ and tissues, deficient amount of hemoglobin to transport oxygen, blood loss, impaired exchange mechanism at the capillary level, hypervolemia. These are the risk factors. Next, nursing diagnosis for ineffective tissue perfusion या वीडियो में हम टोटल नंबर 5 केयर प्लान देखेंगे इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन का, जिसमें फर्स्ट होगा इनफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन, सेकंड इनफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टिश्यू परफ्यूजन, थर्ड होगा इनफेक्टिव रीनल टिश्यू परफ्यूजन, फोर्थ होगा इनफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन और फिफ्थ होगा इनफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। तो ये सारे हमारे यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे केयर प्लान के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान इनफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन। यहाँ सेम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यूज करें, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवल्यूशन। नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट सेज दैट आई एम फीलिंग डिस्निया एंड चेस्ट पेन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव डाटा, abnormal arterial blood gases, use of accessory muscle to breathe, altered respiratory rate, arrhythmia. After these assessment, we write here the nursing diagnosis. Nursing diagnosis यहाँ पर ineffective cardiopulmonary perfusion related to interruption of blood flow, example vasoconstriction. ये नर्सिंग डायग्नोसिस का गोल देखते हैं, टू मेंटेन कार्डियोपल्मोनरी परफ्यूजन, गोल होगा हमारा। नेक्स्ट, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग और इंटरवेंशन मीन्स हमको क्या प्लान करना पेशेंट के लिए, रेशनल मीन्स व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करने वाले हैं, और इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक्टिंग फेज ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, जिसमें जो हमारा इंटरवेंशन में तैयार किया है, मीन्स जो प्लान किया है उसको अप्लाई करना है, मीन्स उसको एक्शन में लाना है। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन होगा असेस पेशेंट फॉर सडन चेंजेस। रेशनल होगा नोट द प्रेजेंस ऑफ सडन चेस्ट पेन, डायफोरेसिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड हेमोप्टाइसिस विच कुड साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलस। इम्प्लीमेंटेशन होगा असेस्ड पेशेंट। नंबर सेकंड इंटरवेंशन, मॉनिटर वाइटल साइन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। रेशनल होगा क्लोजली मॉनिटर्ड ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, respiration and changes in cardiac rhythm. Use this data to compare to baseline information to identify changes in condition. नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन होगा वाइटल साइन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटर्ड। नंबर थर्ड होगा मॉनिटर हीमोग्लोबिन लेवल। रेशनल होगा इफ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज लेस ऑक्सीजन विल बी परफ्यूज थ्रू द बॉडी एंड टिश्यूज। इम्प्लीमेंटेशन होगा मॉनिटर्ड हीमोग्लोबिन। नंबर 4 होगा चेक फॉर ऑप्टिमल फ्लूड बैलेंस, एडमिनिस्टर IV fluid as ordered. रेशनल होगा इन sufficient fluid intake, maintain adequate filling pressure and optimize
कार्डिक आउटपुट needed for tissue perfusion. Implementation होगा administered IV fluids as ordered. नंबर 5 होगा maintain optimal cardiac output. रेशन होगा this ensure adequate perfusion of vital organs. Implementation होगा cardiac output maintained. नंबर 6 intervention होगा check capillary refill. रेशन होगा if capillary refill time is slashes, uh, the client may be hypovolemic and lack of blood volume to support the circulatory system with adequate oxygenation. Implementation होगा checked capillary refill. Number 7 intervention होगा administer medications to improve blood flow. रेशन होगा vasodilators open blood vessels to improve blood flow such as nitroglycerin for chest pain or hydralazine for high blood pressure. Implementation होगा मेडिकेशन एडमिनिस्टर. नंबर 8 होगा एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड. रेशनल होगा टू सपोर्ट ऑक्सीजनेशन एंड परफ्यूजन ऑक्सीजन में बी नीडेड टू एंश्योर गैस एक्सचेंज. इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर. नंबर 9 होगा एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द साइन ऑफ एंजाइना. रेशनल होगा चेस्ट पेन, जॉब बैक और आर्म पेन आर द साइन ऑफ एंजाइना. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है हमको यहाँ पर explain or education given to the patient. After providing these interventions, we write here the evaluation. यहाँ देखते हैं evaluation फर्स्ट केयर प्लान का. फर्स्ट केयर प्लान जो हमारा है इनफेक्टिव कार्डियो पल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन, उसका evaluation हो गया यहाँ पर कार्डियोपल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन्ड. मीन्स जो हमारा गोल था टू मेंटेन कार्डियोपल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन वो हमने यहाँ अचीव किया है बाय डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को हमने प्रोवाइड किए हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पर इनफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन का नर्सिंग केयर प्लान तैयार करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड नर्सिंग केयर प्लान. नर्सिंग केयर प्लान इनफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टिश्यू परफ्यूजन. इसमें देखते हैं असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज अबाउट नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन. ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं डिस्टेंडेड एब्डोमेन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड. On the basis of these interventions, we write the nursing diagnosis that is here ineffective gastrointestinal tissue perfusion related to hypovolemia. गोल होगा to maintain gastrointestinal tissue perfusion. प्लानिंग रेशनल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन होगा assess wall sound. रेशनल होगा inadequate blood flow can slow peristalsis and digestion of the intestine. Implementation होगा vowel sound assessed. Number second assess location of abdominal pain and characteristics. रेशनल होगा sudden abdominal pain, sign of rupture of an aortic aneurysm, gallstone, pancreatitis, appendicitis and wall obstruction cause severe pain. Implementation होगा assessed location of abdominal pain and characteristics. Number third देखते हैं monitor changes in stool. रेशनल होगा constipation can result from delayed digestion, blood in the stool, sign of ischemic colitis which result from reduced blood flow to the large intestine. Bright blood or black stool can signal a GI bleed. Implementation होगा monitored changes in stool. Number fourth maintain optimal cardiac output. रेशनल होगा this ensure adequate perfusion of vital organs. Implementation होगा cardiac output maintain. Number fifth maintain fluid and electrolyte balance. रेशनल होगा patient who are vomiting may become dehydrated and replace lost fluid and electrolytes through IV fluids and supplements. Implementation होगा fluid and electrolyte balance maintain. Number 6 encourage for small easily digested food. रेशनल होगा as patient recover from all surgeries or other illnesses start with liquid or bland diets so as not to overwhelm the gastric system. Implementation होगा encourage for the small and easily digested food. Number 7 administer medications as prescribed. रेशनल होगा administer an antiemetics to control vomiting.
इम्प्लीमेंटेशन होगा administered medication as prescribed. After providing these interventions, we write here the evaluation. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation हम क्या लिखते हैं. तो यहाँ evaluation होगा gastrointestinal tissue perfusion maintained, मीन्स जो हमारा गोल था टू मेंटेन gastrointestinal tissue perfusion वो हमने अचीव किया है डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं. तो इस तरह से हम इनफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टिश्यू परफ्यूजन का नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3. नर्सिंग केयर प्लान इनफेक्टिव रीनल टिश्यू परफ्यूजन. इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा पेशेंट कंप्लेन अबाउट लेस यूरिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव डेटा हाई और लो ब्लड प्रेशर एलिवेटेड BU and creatinine. Nursing diagnosis होगा ineffective renal tissue perfusion related to glomerular malfunction. Second to renal disease गोल होगा to maintain renal tissue perfusion planning. Rational implementation देखते हैं. फर्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन मॉनिटर यूरिन आउटपुट अमाउंट एंड characteristics. Rational होगा kidneys that are not perfusing adequately will not produce urine. Monitor for urine output less than 30 ml per hour or very dark concentrated urine. Implementation होगा urine output monitor. Number second, monitor VU and creatinine ratio. These values will increase if the kidneys are not functioning and filtering correctly. A high VU and to creatinine ratios signal poor blood flow to the kidney. Implementation होगा monitored VU and creatinine. Number third, observe for edema. Rational होगा kidneys that are not filtering waste product and fluid through urine will result in retention observed as edema and swollen extremities. Implementation होगा observe for edema. Number 4 होगा maintain optimal cardiac output. Rational होगा this ensure adequate perfusion of vital organ. Implementation होगा cardiac output maintain. Number 5 check for optimal fluid balance. Administer IV fluids as ordered. Rational होगा sufficient fluid intake maintains adequate filling pressure and optimize cardiac output needed for tissue perfusion. Implementation होगा administer IV fluid as ordered. Number 6 measures intake and output. Rational होगा document accurate intake oral IV against output urine MSS to monitor for fluid imbalance. Implementation होगा intake and output measured. Number 7 होगा check weight daily. Rational होगा weight monitoring can detect worsening fluid retention caused by a poorly functioning kidney. Implementation होगा weight check. Number 8 होगा educate patient about diet recommendation. Rational होगा fluid and salt may be restricted as this can further exacerbate fluid retention. Patient may need to decrease protein intake as this can further damage kidney. Implementation होगा education given about dietary recommendations. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान का एवेल्यूशन स्टेप हमको क्या लिखना है. तो यहाँ एवेल्यूशन में लिखना है हमको रीनल टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन. मीन्स जो हमारा गोल था टू मेंटेन रीनल टिश्यू परफ्यूजन वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड कराए हैं. और लास्ट में हमको एवेल्यूशन लिखना है. तो ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान फॉर इनफेक्टिव रीनल टिश्यू परफ्यूजन. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4. नर्सिंग केयर प्लान होगा इनफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन. देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डेटा व्हेन आस्किंग क्वेश्चन पेशेंट रेस्पॉन्ड इनएप्रोप्रिएटली अल्टर्ड मेंटल स्टेटस. ऑब्जेक्टिव डेटा रेस्टलेसनेस डिफिकल्टी swallowing changes in pupillary reaction. Next nursing diagnosis होगा ineffective cerebral tissue perfusion related to interruption of blood flow secondary to ischemic stroke. गोल होगा to maintain cerebral tissue perfusion. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन रेशनल इम्प्लीमेंटेशन. फर्स्ट असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मेंटेशन. रेशनल होगा पुअर परफ्यूजन टू द ब्रेन में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन स्पीच चेंज पुअर मोटर कंट्रोल विजन लॉस चेंजेस इन सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. इम्प्लीमेंटेशन होगा असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस.
Number second, reorient to the environment as needed. Rational होगा decrease cerebral blood flow or cerebral edema may result in changes in level of consciousness. Implementation होगा patient oriented. Number third, provide rest period between care activities and prevent the duration of procedures. Rational होगा constant activity can further increase intracranial pressure by creating cumulative stimulant effect. Rational implementation होगा rest period provided between activities. Number four, assess for sign of stroke. Rational होगा if blood flow to the brain is impeded by a blood clot or slowed by bleeding, the patient may experience facial dropping, slurred speech and muscle weakness. Implementation होगा assess for sign of stroke. Number fifth होगा avoid measures that may trigger increased intracranial pressure such as coughing, vomiting, straining at stool neck, inflection, head flat or peering down. Rational होगा these will further reduce cerebral blood flow. Implementation होगा avoided measures that triggers increase intracranial pressure. Number six, perform frequent neurological examination. Rational होगा neurologic exams will ordered at specified intervals to assess for progression or worsening of mentation. Implementation of neurological exams perform. Number seven, elevate head of bed. If patient has increased intracranial pressure, as the head of bed should be elevated to 30 degree and their neck kept in neutral position to promote circulation and lower pressure. Implementation होगा head of bed elevated. Number eight होगा administer a anticonvulsant as needed. Rational होगा these reduce the risk of seizure which may result from cerebral edema or ischemia. Rational होगा implementation होगा administer as needed. Number nine होगा administer medication as prescribed. Osmotic diuretics will help lower intracranial pressure. Corticosteroids can help with the inflammation and edema. Thrombolytics will break up a clot impeding blood flow. Implementation होगा prescribe medication administer. After providing these interventions, we write here the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान का evaluation हम जो सबसे लास्ट में लिखते हैं. evaluation होगा यहाँ पर cerebral tissue perfusion maintain में जो गोल तुम्हारा to maintain cerebral tissue perfusion वो हमने यहाँ अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो ये था फ्रेंड्स नर्सिंग केयर प्लान ऑन इनफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5. नर्सिंग केयर प्लान इनफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन. देखते इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट रिपोर्ट अल्टर्ड स्किन सेंसेशन क्लोडिकेशन. ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं वीक और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस एडिमा डिलेड बोन डीलिंग पेलर स्किन व्हेन लेग्स आर रेज्ड. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा इनफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज. गोल होगा टू मेंटेन एडिक्वेट पेरिफेरल परफ्यूजन. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन रेशनल इम्प्लीमेंटेशन. इंटरवेंशन होगा मॉनिटर स्किन थॉरोली. रेशनल होगा चेक एडिमा बोन्स और अल्सरेशंस स्किन कलर टेम्परेचर हेयर लॉस एंड थिकन नेल. इम्प्लीमेंटेशन होगा मॉनिटर्ड स्किन. सेकंड असेस पेरिफेरल पल्सेस. रेशनल होगा मॉनिटर फॉर एब्सेंट और वीक पल्सेस विच इंडिकेट पुअर परफ्यूजन. इम्प्लीमेंटेशन होगा पेरिफेरल पल्सेस असेस. नंबर थर्ड मेंटेन ऑप्टिमल कार्डिक आउटपुट. रेशनल होगा दिस एंश्योर्स एडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ vital organs. Implementation होगा cardiac output maintain. Number 4 check for optimal fluid balance. Administer IV fluids as ordered. Rational होगा sufficient fluid intake, maintain adequate filling pressure and optimize cardiac output needed for tissue perfusion. Implementation होगा IV fluid administered. Number 5 assist with position change. Rational होगा gently repositioning a patient from a supine to a sitting standing position can reduce the risk for orthostatic BP changes. Implementation होगा assisted during the changing position. Number 6 promote active passive
Range of motion exercises रेस्ट होगा. Exercise prevent venous stasis and further circulatory compromise. Implementation होगा promoted for exercise. Number 7 assess for pain numbness. रेस्ट होगा patient with conditions such as diabetes, peripheral arterial disease, peripheral venous disease may lack circulation to extremities. They may experience pain or dull sensation from poor blood flow. Implementation होगा assessed for pain and numbness. Number 8 use a Doppler if needed to assess blood flow. Rational होगा if peripheral pulses are difficult to palpate, a Doppler can assist in locating a pulse. Implementation होगा Doppler use of peripheral pulses. Assessment. Number 9 apply anti-embolism stocking. Rational होगा patient with edema or poor circulation to the lower leg may require compression stocking to increase circulation. Implementation होगा applied anti-embolic stocking. 10 intervention होगा discourage sitting for long period or crossing ankles. Rational होगा this impedes blood flow and venous return. Implementation होगा discourage for the long sitting and crossing ankle. Number 11 encourage lifestyle behavior to improve blood flow. Rational होगा quitting smoking, diet control to manage diabetes and proper exercise are necessary to control chronic disease. Implementation का encourage for the lifestyle modification. Number 12 prevent exposure to cold. Rational का Raynaud's disease result in poor blood flow to smaller arteries, usually the fingers, in response to cold or stress. Implementation का exposure to cold prevented. Number 13 if the patient is overweight, encourage weight loss to decrease venous disease. Rational का obesity is a risk factor for the development of chronic venous disease. Implementation का encourage for weight loss. Number 14 give oxygen therapy as necessary. Rational का this saturates circulating hemoglobin and augments the efficiency of blood that is reaching the ischemic tissue. Rational implementation of oxygen therapy given as ordered. Number 15 administer medications as prescribed to treat the underlying problem. Rational का antiplatelets, anticoagulants, these reduce blood viscosity and coagulation. Peripheral vasodilators, these enhance arterial dilation and improve peripheral blood flow. Antihypertensive, these reduce systemic vascular resistance and optimize cardiac output and perfusion. Inotropes, these improve cardiac output. Implementation में लिखना है medications administer. Number 16 देखते हैं provide knowledge on normal tissue perfusion and possible cause of impairment. Rational होगा knowledge of causative factor provide rational for treatment. Implementation होगा knowledge given about tissue perfusion. Number 17 teach the patient to recognize signs and symptoms that need to be reported to the nurse. Rational होगा early assessment facilitate immediate treatment. Implementation होगा patient educated about poor peripheral perfusion. After writing these interventions, we write here the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation. तो यहाँ evaluation लिखना है हमको ineffective peripheral tissue perfusion का. Peripheral tissue perfusion maintain, जो गोल था to maintain adequate peripheral perfusion वो हमने अचीव किया है by different interventions. तो इस तरह से हम ineffective peripheral tissue perfusion का यहाँ कंप्लीट करते हैं. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा and share this video with your friends and subscribe my YouTube channel Anand's Nursing File Preparation for the Nursing Competition Examination. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.